Good morning. Today I will discuss about the just important questions related to Unit 5. And what is the most important questions of Unit 5 just will come. We have just only discussed about them. The first of all questions, 2 mark questions. 2 mark question you will see here. 2 mark questions. Marks according to marks. So what is the 2 mark question is there? So first of all, define Laplace transformation we will discuss here. The question number 1. So what is Laplace transformation? What is Laplace transformation? Just we can define here what is Laplace transformation. Uh, we define here Laplace transformation क्या है? So first of all, we define this is a transformation, a time domain function into the S domain function. Actually, it is a transformation from time domain function to S transfer domain function. So Fs, that is the S transform and time domain function is f of t. The Laplace of f of t, the t domain function is converted into S domain function, is defined in this Laplace transformation. So how it is defined here? The Laplace transformation defined, it is an integral part. And Fs can be defined here, or Laplace of f of t can be defined here. Integration of limiting integration 0 to infinity e to the power minus of st ft dt. So that is actually mathematical model for the Laplace transformation and what is the defined for Laplace transformation. And here t is greater than 0. The limiting integral value t must be satisfied, t is greater than equal to 0. And f of t here is given, that is the piecewise continuous function. Piecewise continuous function. F of t. That is equal to piecewise continuous function. तो we define here the f of s क्या है ना, that is Laplace of a given function. और जो फंक्शन यहाँ पे हम चूज किए हैं f of t, and वो क्या होता है ना, f of t is a piecewise continuous function whose interval is 0 to infinity where. And here another function s is considered. S is any constant greater than of k, or s is positive number. S is positive number, and this is called as the Laplace transformation of the given function f of t. इसको हम क्या कहते हैं? That is also Laplace transformation. We can say this function. So first number question is what is Laplace transformation? Just we define here. Laplace transformation क्या है? So many various formula I have already discussed in your class. The क्या है Laplace inverse हम कैसे calculation करते हैं? Now just you know the Laplace of f of t we define here. That is equal to क्या था ना? That is fs we have represent here. And f of t हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, दैट इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. fs का जब इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो दैट इज वैल्यू ऑफ Laplace ऑफ f of t. So we have just defined your inverse of the Laplace function. Just will come in the second question. What is the second question of the Laplace? Define first shifting theorem. What is first shifting theorem? The first shifting theorem क्या है? Give an example. Question number 2. State first shifting theorem. First shifting theorem. And give an example. फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है उसका हम एग्जाम्पल लिख लेंगे.
द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लेट f of t be a given function, be a given function. हमको एक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ टी का, एंड एफ ऑफ टी के साथ जब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका जब लाप्लास कैलकुलेशन करेंगे, एफ ऑफ टी जो फंक्शन है उसका साथ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जब लाप्लास निकलेंगे तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. एनी फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड हियर, एंड एफ ऑफ टी के साथ एनी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो फंक्शन आएगा दैट इज शिफ्टिंग थ्योरम हो जाएगा, एंड दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं, एंड दैट इज द एस शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं, एंड दैट इज एफ एस माइनस ए होता है. तो हाउ दिस इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. व्हाट इज एफ एस? ना एफ एस होता है एफ ऑफ टी का लाप्लेस. एफ एस होता है लाप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी. जस्ट रिमेंबर एनी फंक्शन तुमको गिवन होगा एंड उसका जब हम लाप्लेस कैलकुलेशन करेंगे, सपोज दिस इज एफ एस है, एफ एस होगा, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है ना, उसका जब लाप्लेस कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद एस वैल्यू के जगह में एस माइनस ये कोफिशिएंट वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. एनी वन एग्जांपल यहाँ पे देने के लिए पूछा है. गिव वन एग्जांपल. लेट लेट Laplace of e to the power 3t and t square is there. So accept the exponential function. Another value is that this is f of t. So here f of t is mentioned here. What is f of t? That is t square. इस f of t t square हो गया है, तो पहले इसका हम लाप्लेस निकालेंगे. उसका लाप्लेस क्या होता है ना, t स्क्वायर का लाप्लेस f of t, लाप्लेस f of t हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बाई एस क्यू हो जाएगा. तो इसका लाप्लेस मुझे चाहिए, तो एफ ऑफ टी का पहला लाप्लास हम ऑलरेडी इवैल्यूएट किए हैं. जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंबाइन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं ना, दैट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं. मींस लाप्लास ऑफ e टू द पावर 3t t स्क्वायर जब होगा तो दैट इज 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s माइनस 3 का क्यूब. जस्ट यू कैन सी दिस इज द शिफ्टिंग वैल्यू, and this is the first shifting theory example we have written here to mention this is the first shifting theory example. So this is question number 2. Question number 3. What is question number 3? Laplace of 12 by s minus 3 whole cube. Find the inverse Laplace. Inverse Laplace 12 by s minus 3 to the power 4. 12 by s minus 3 to the power 4. Just you remember here shifting, because here just you remember here s is shifted to s minus 3. So just you can apply here the first shifting theorem. So according to first shifting theorem, when you remove 3 part, means shifted value is removed here. So क्या करेंगे ना, e to the power 3t हम जब लिख देते हैं तो शिफ्टिंग में एक्सपोनेंशियल पार्ट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, तो व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू ना, लाप्लास इनवर्स ऑफ 12 बाय s to the power 4. जब ये किसका फॉर्मूला आता है, जस्ट यू कैन रिमेंबर हियर ना, जस्ट ये जब मीनिंग करेंगे तो e to the power 3t L इनवर्स 12 इधर ले सकते हो, 12 बाय दिस वैल्यू 1 by s to the 4 means 3 plus 1. So this is एक 3 फैक्टोरियल यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एक 3 फैक्टोरियल हम डिवीजन कर देते हैं, तो क्या होता है ये फॉर्मूला में सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे आ सकता है. तो यू कैन सी हियर which type of formula will come here. Just you can say Laplace of t to the power n, that is your mentioned application formula, n factorial by s to the power n plus 1.
Just when you compute the inverse means L inverse n factorial by s to the power n plus 1, and that is equal to t to the power n. Just remember this value. यहाँ पे क्या होता है देखेंगे, n factorial by s to the power n plus 1 जब हम कहते हैं, just 3 factorial by s to 3 plus 1, that is t to the power 3. So this is the t to the power 3 value. So ये इनवर्स लाप्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 by 3 factorial 3 into 2, that is 6 into e to the power 3t, and this is t cube. So that is 6 into 2. So 2 e to the power 3t and e t to the power cube. So this is the value, L inverse of S cube का value. So just you can check out this question, and L inverse of 12 by s minus 3 to the power 4, and that is equal to 2 into e to the power 3t and t cube. So this is the answer. By using the inverse Laplace transformation, you can show this is the value. Again, another question. This is the question number 3. Question number 3. And just we're coming to question number 4. What is the question number 4? Another question. 4 by find the inverse Laplace. Question number 4. Inverse यहाँ पे भी calculation करना है ना. Inverse Laplace of 4 by s square minus 2s minus 3. Minus 2s minus 3. Just you can see इसका inverse हमको निकलना होगा. So how do you compute this inverse? Now just ये shifting theorem apply करेंगे. एक किसी का whole square होना चाहिए. तो ये L inverse of 4y, ये करेंगे s square minus of 2s plus of 1 minus of 4 कर देते हैं. Then this is a 1 whole square formula जाता है. Squaring procedure यहाँ पे adopt करेंगे. तो L inverse of ये 4 divided by s minus 1 whole square plus minus 2 square, ये वैल्यू आ जाता है. तो जस्ट रिमेंबर हियर L इनवर्स यहाँ पे 4 आएगा, एंड दिस इज द s माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 स्क्वायर हो गया. तो ये शिफ्टिंग थ्योरम, बिकॉज s is shifted here, s minus 1, so just remember the first shifting theorem. So here s is shifted to कितना, s minus 1, so this is the 1 is shifting. So just shifting exponential value यहाँ पे रिमूव कर देते हैं. पहले फर्स्ट रिमूव द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. कैसे रिमूव करेंगे तो देखते हैं. L इनवर्स में e टू द पावर t बाहर में आ जाएगा. देन व्हाट इज अनदर वैल्यू, तो यहाँ पे 4 ऊपर में है, 4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर. देन ये किसका फॉर्मूला आएगा, e टू द पावर 2 एंड 2 एक बाहर में आ जाएगा. देन दिस इज cos sin hyperbolic 2t. Just remember, and this is the solution of this problem, right? So you can check this is your solution of this problem. And just question number 4 has over already, and just will come to question number 5. Question number 5. What is question number 5? Just you can remember L inverse sy. L inverse s divided by s plus 1 by 2 whole square. S plus 1 by 2 whole square plus 1. And this is your process. This is also, see, this is also a shifting theorem. First shifting theory here applied. So this is also you can retain here L inverse s to s में यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एक s plus half ऐड करेंगे, एक माइनस हाफ यहाँ पे करेंगे, राइट. देन जस्ट यू कैन सी s plus half.
whole square plus 1. Now s is shifted. Now s is shifted here, so you can apply here also the fast shifting theorem. यहाँ पे भी हम फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? L इनवर्स s plus 1/2 divided by s plus 1/2 whole square plus 1, एक टर्म सेपरेट कर देते हैं, माइनस 1/2 L इनवर्स 1 by s plus 1/2 whole square plus 1. This is also another part of this function. Just you can see this is shifting theorem we have to apply here. So a is -1/2. So e to the power -1/2 हम बाहर में ले लिए हैं. तो what is the remaining part? L inverse of s divided by square plus 1. Same thing also e to the power -half t बाहर में ले जाते हैं. तो इनवर्स ऑफ इसका आ जाएगा 1 by कितना आएगा? स्क्वायर प्लस 1. राइट. तो जस्ट यू कैन चेक हियर. ये किसका लाप्लेस है? cos t. A sin t. So this is your answer. E to the -1/2 t 2t minus of 1/2 e to the -1/2 t, and this is sin t. So this is your answer for the inverse Laplace function. So define unit step function. Another function also given here. Various process also given for the solution. Define unit step function. Question number 5, question number 6. This is question number 5. And this is question number 6. Define unit step function. Unit step function. Unit step function क्या होता है? Now, unit step function basically define here ut minus a, and that is equal to ut minus a. एक 0 होगा, एक 1 होगा. एक 0 होगा when t is less than a, and एक 1 होगा when t is greater than equal to a. So this is the condition of unit step function. A unit step function is defined as ut minus a is equal to u0 when t is less than a and 1 when t is greater than a. So what is the Laplace of unit step function? Laplace of unit step function. तो यहाँ पे unit step function Laplace करेंगे. Laplace of unit step function ut minus a, that is equal to the minus of as by s. This is unit step function for Laplace. So Laplace of example करेंगे तो ut minus 2 suppose करेंगे. What is the Laplace? e to the minus 2s by s. That is the example of unit step function. Question number 6. Question number 7. What is the question number 7? Just you can look here. What is the question number 7? State second shifting theorem. State second shifting theorem. And give an example.
गिव एन एग्जांपल। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, उसका एग्जांपल कुछ क्या है उसका एग्जांपल। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, उसको कुछ एग्जांपल हमको देना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे सेकेंड शिफ्टिंग में क्वेश्चन है एनी फंक्शन दैट इज द टी शिफ्टिंग थ्योरम। Second shifting theorem is also called as the T-shifting theorem. T-shifting theorem. Okay? तो ये हम टी शिफ्टिंग थ्योरम भी कह सकते हैं, मतलब हाउ टू शिफ्टिंग दिस वैल्यू। इफ दैट इज मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, लाप्लेस ऑफ f is shifted to t minus n and its step function shifted to t minus a होगा। इस जो प्रोडक्ट का जब लाप्लेस कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा ना, e टू द पावर माइनस e टू द पावर as into Laplace of f of t. This is second shifting theorem. Just remember, when function is shifted to t minus a and unit step function also shifted to t minus a, then जो a is removed here, just a कैसे remove हो जाएगा ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंबाइन हो जाएगा e to the power as, then a यहाँ पे चला जाएगा, f कितना है ना t minus a है, तो a जब चला जाएगा तो what is the remaining, this is f of t। इसी f of t का लाप्लेस यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। So this is called as the second shifting theorem। तो इसको हम सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ ऑल, तो वन एग्जांपल जब करते हैं, सपोज लाप्लेस ऑफ u t minus 1 and t minus 1 c, and this is a one function, unit step function, this is a given function, that means ft minus 1 is given here। f t minus 1 मुझे given है यहाँ पे कितना, that is t minus 1 given है, that is t minus 1 यहाँ पे given है। So what is a here, a is, this is the value a। तो ये जब a हट जाएगा तो what is f of t ना, f of t is equal to only t आएगा। तो जस्ट यू रिमेंबर हियर, इसका जब लाप्लेस करेंगे तो e to the power as means s into Laplace of f of t means Laplace of t, and Laplace of t that means 1 by s square, e to the power s by of s square। So this is the Laplace of the second shifting theorem example, just remember। Another question, just question number 7, question number 8। क्वेश्चन नंबर कुछ 8 है। सपोज वन क्वेश्चन है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू गिवन है 2 है, 0 है, साइन टी है, एंड इसका कुछ कंडीशन है, इफ 0 लेस देन टी लेस देन पाई एंड पाई लेस देन टी लेस देन 2 पाई, पाई लेस देन टी लेस देन 2 पाई एंड टी ग्रेटर देन 2 पाई। तो इसको हम लाप्लेस कैसे कैलकुलेशन कर, फाइंड द लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका कैसे लाप्लेस करेंगे, बाय यूजिंग द यूनिट स्टेप फंक्शन ओनली। सो एक्सप्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पे एक्सप्रेशन करेंगे एफ ऑफ टी का, क्या होगा ना, जो पहला वैल्यू था तुम्हारे यहाँ पे 2 इंटू यू टी माइनस 0 माइनस यू टी माइनस 5, 2 इंटू यू टी माइनस 0 माइनस 2 इंटू यू टी माइनस 5, एक पार्ट है, प्लस 0 इंटू अदर टर्म दैट इज 0 प्लस sin 2 into u t minus of 2 pi। So this is the shifting theorem। Our expression in the form of shifting method में हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, देखो f of t का जो वैल्यू है
2 into u t minus 0 minus 2 into u t minus 5 plus sin t into u t minus 2 5। इसका जब इनवर्स लाप्लेस हम करेंगे, लाप्लेस ऑफ दिस फंक्शन, लाप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, टू लाप्लेस ऑफ यू टी माइनस 0 minus 2 Laplace of u t minus 5 plus Laplace of sin t u t minus 2 5। Just to remember, what is this condition? The Laplace of u t minus 0, that is e to the minus s by s, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, तो e to the power s by 2 by s आ जाएगा, माइनस 2 by e to the power pi s by s आ जाएगा। And just you can see Laplace of sin t means sin pi minus 2 pi minus t, 2 pi t minus 2 pi and u t minus 2 pi. Just you can see, you can apply the second shifting theorem here. And that is one negative we consider, that is 2 by s minus 2 by s e to the power pi s, and that is minus e to the power 2 pi s. And Laplace of sin t, that is a square plus 1. So this is your answer. That is the convolution unit step function. Okay. So just of all, define the direction delta function or find the inverse of another question. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना आ गया, 8। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आ जाइए। डिफाइन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, जस्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम, जस्ट 1 मिनट। इंसर्ट करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में क्या लिखेंगे। क्या होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम, जस्ट मिनट। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस of the existence theorem, the product of the fs कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है एच ऑफ टी एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एंड दैट इज एफ इंटू जी होल इंटू टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस। इज इक्वल टू क्या है,
and 0 to infinity, 0 to s, 0 to t, f tau gt minus tau d tau. So this is the statement of convolution theorem, where ft and gt are the two functions here. We can define where ft and g of t are two functions. पर fs क्या होता है ना, लाप्लेस ऑफ f of t, एंड g of s क्या होता है ना, लाप्लेस ऑफ g of t. ये है, ये डिफाइन किए हैं. This is the convolution theorem, and this is the statement of convolution theorem, we can say. Okay, so this is your statement of convolution theorem. Question number 9 and then question number 10. What is the another convolution theorem example solved by using the convolution theorem? Solve L inverse s square by s minus 1, 1 by s square into s minus 1. इसको हम सॉल्व करें, कैसे करेंगे? सपोज बाय यूजिंग द कन्वोल्यूशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इनवर्स करेंगे, 1 by s स्क्वायर करेंगे इंटू 1 by s minus 1 करेंगे. तो यहाँ पे हम एक चूज करेंगे, एफ एस एक फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं 1 by s स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स अनदर लाप्लेस फंक्शन है, जिसको हम करेंगे 1 by s minus 1. तो यहाँ पे एफ टी हमको कैसे आएगा ना, दैट इज टी ओनली. जी टी कितना आएगा ना, इसका इनवर्स लाप्लेस ई टू द पावर टी आएगा. ये एफ टी वैल्यू आ गया एंड दिस जी टी वैल्यू आ गया. तो मुझे एक्चुअली कन्वोल्यूशन में उसका इनवर्स लाप्लेस कैलकुलेशन करना है. तो हाउ टू कैलकुलेट कन्वोल्यूशन बाय इनवर्स लाप्लेस? देखो इनवर्स लाप्लेस हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस तो हम एक फॉर्मूला में यहाँ पे किए थे, 0 to t था, एफ टी माइनस टाउ एंड जी टाउ डी टाउ, ऐसा भी हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे एफ टी माइनस टाउ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 to t, दिस इज t माइनस टाउ, एंड जी टाउ ई टू द पावर टाउ डी टाउ, राइट. तो ये जो फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. तो इसका इंटीग्रेशन u इंटू वी के फॉर्मूला के हिसाब से आएगा. तो ये फर्स्ट कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन t माइनस टाउ कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर टाउ माइनस इसका डेरिवेटिव -1 इंटू इसका फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर टाउ, फिर आ जाएगा. तो दिस इज योर एंडिंग वैल्यू, एंड इसका 0 to t है. सो वैल्यू कितना आएगा देखो, जब टाउ यहाँ टाउ के जगह में हम t डाल देते हैं तो ये 0 आ जाता है, एंड दिस वैल्यू बिकम्स ई टू द पावर t, एंड 0 डालेंगे तो +1 आ जाएगा. So this is inverse Laplace of fs into gs. So this is your convolution statement, and whatever we have defined here, like this process, you can complete this convolution process also. Okay, just you can see these questions. First of all,